Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You people are watching your own channel Sadan Heart Official. Friends, I hope so. You people all will be fine, inshallah. Friends, I started the Kanuni Shahadat Order 1984. I discussed the Article 133 and Article 132 in my previous lectures, which was related to the cross-examination, examination of witnesses, and the examination in chief. In this discussion, I will discuss the Article 141, which was related to the questions lawful in cross-examination. मतलब cross-examination में कौन से questions lawful है? When a witness is cross-examined, he may, in addition to the questions here and before referred to, be asked any question which tend to testify his veracity, to discover who he is and what his position in life. Friends, क्रॉस एग्जामिनेशन में इस किस्म के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और वो क्वेश्चंस क्या है, मतलब वो चेक किया जाता है कि वो कितना सच्चा है. उसके बाद ये ये फर्स्ट क्वेश्चन होता है. इसके बाद यही होता है उसके मतलब ये क्वेश्चन उसके पर्सनैलिटी के साथ रिलेटेड है. उसके बाद ये पूछा जाता है क्रॉस एग्जामिनेशन में मतलब वो कौन है और उसकी ज़िंदगी में क्या पोजीशन है, मतलब वो क्या काम करता है, वो किधर से है. टू शेक हिज क्रेडिट बाय इंजरिंग हिज कैरेक्टर, although the answers to such questions might tend directly or indirectly to criminate him or might expose or tend directly or indirectly to expose him to penalty or forfeiture. मतलब वो ये चेक किया जाता है उसकी क्रेडिट को चेक उसके मतलब उसकी पर्सनैलिटी को शेक किया जाता है, मतलब उससे आगे पीछे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसलिए पूछे जाते हैं ताकि उसकी क्रेडिबिलिटी को चेक की जाए. अगर वो क्वेश्चंस उस क्राइम के साथ रिलेटेड हो सच और उसके साथ सच्चे हो, अगर वो उसमें इन्वॉल्व हो तो वो उससे सज़ा भी मिल सकती है. अगर ऐसे कोई क्वेश्चन अगर उसको वो एक्सपोज करता है उसकी अगर वो उसमें इन्वॉल्व होता है तो उससे उसको सज़ा भी दी जा सकती है और उन्हीं जवाबात से वो बच भी सकता है. इसके बाद the examination of a witness subsequent to the cross-examination by the party to hold him shall be called have re-examination. क्रॉस एग्ज़ामिनेशन के बाद एक एग्ज़ामिनेशन होती है, मतलब उसी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन रह जाते हैं, फॉरगेट हो जाते हैं काउंसिल से, उसके बाद अगर उससे कोई क्वेश्चन पूछे जाने पर हो तो री एग्ज़ामिनेशन में वो पूछ लेते हैं. The re-examination shall be directed to the explanation of matter referred to in cross-examination, and if new matter is by permission of the court introduced in re-examination, the adverse party may further cross-examination that matter. The examination shall be directed to explanation of matter referred in the cross-examination. मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन में जो अगर मैटर्स की कुछ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है तो वो उसको फर्दर री एग्जामिनेशन में वो मैटर्स एक्सप्लेन किए जाते हैं. एंड इफ़ न्यू मैटर इज़ बाय परमिशन ऑफ द कोर्ट, अगर कोई न्यू मैटर राइज करनी हो तो कोर्ट की परमिशन से ही वो क्वेश्चंस री एग्जामिनेशन में वो पूछ लेते हैं. द एडवर्स पार्टी में फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन दैट मैटर. री एग्ज़ामिनेशन में जो पार्टी उससे क्वेश्चंस कर लेती है तो फर्दर जो पार्टी होती है अपोजिट पार्टी वो उसको फर्दर री एग्ज़ामिनेशन कर सकता है. इन कंक्लूजन we can say that a witness is examined by a court during the trial of the case. In conclusion, हम ये कह सकते हैं that a witness is examined by a court during the trial of the case. मतलब विटनेस को एग्ज़ामिन करना पड़ता है बाय कोर्ट और उसी ड्यूरिंग द ट्रायल में, मतलब कोर्ट उसे एग्ज़ामिन कर लेता है ट्रायल के दौरान में ही, केस के ट्रायल के दौरान में ही. एट फर्स्ट एग्ज़ामिनेशन इन चीफ इज़ डन. फर्स्ट जो होता है एग्ज़ामिनेशन इन चीफ किया जाता है, मतलब वो पार्टी जो उसको बुलाती है उससे वो एग्ज़ामिनेशन कर लेता है. देन ही इज़ क्रॉस एग्ज़ामिन. उसके बाद जो अपोजिट काउंसिल होती है, अपोजिट पार्टी होती है, वो उसको क्रॉस एग्ज़ामिन कर लेता है.
اس کے بعد اینڈ ایف ریکوائرڈ ری ایگزامن ہم، اس کے بعد اگر کوشچنس اگر ریکوائرمنٹ ہو تو وہ اسے ری ایگزامن کر لیتے ہیں. اگر ری ایگزامن میں نیو میتھڈز رائز کرنے پر ہو تو کورٹ کے پرمیشن سے ہی وہ رائز کیے جاتے ہیں. آفٹر دا ہول پروسیس the witness is recorded and the court decide the case on the basis of the statement and facts of the case. اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر ری ایگزامینیشن کے بعد اپوزٹ پارٹی اس سے اگر کوئی کویشچنس پوچھے تو اس کو فردر وہ کراس ایگزامن کر لیتا ہے. اور اسی ہول سیناریو کے بعد آفٹر دا ہول پروسیس دا اسٹیٹمنٹ آف دا وٹنس از ریکارڈیڈ، اسٹیٹمنٹ آف دا وٹنس ریکارڈ کیا جاتا ہے اینڈ دا کورٹ ڈیسائڈ دا کیس. اور اس کے بعد کورٹ کیس کو ڈیسائڈ کر لیتا ہے آن دا بیسس آف دا اسٹیٹمنٹ، اسی اسٹیٹمنٹ کے بیس پر اینڈ فیکٹس آف دا کیس، اسی اسٹیٹمنٹ آف دا وٹنس کے بلبوتے پہ کیس ڈیسائڈ ہو جاتا ہے، یا اور اس کے ساتھ فیکٹس آف دا کیس پر بھی کیس ڈیسائڈ ہو جاتا ہے. فرینڈس، دس واز ویری شارٹ اینڈ سمپل lecture about the article 133, article 132, which was related to the examination of witnesses, examination in chief I explained, examination, cross examination, and then re-examination, and then conclusion. فرینڈس، اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو پلیز اسے لائک کیجیے اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ آپ کے سبسکرپشن، آپ کے فیڈ بیک سے ہی مجھے بہت زیادہ انکریجمنٹ ملتی ہے. اینڈ دین کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ مجھے اور کیا امینڈمنٹس کرنی چاہیے اپنے لیکچرز میں. فرینڈس، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اگر آپ نے اس بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا ہے تو بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ آپ لوگوں کو اس چینل کے نئے ویڈیوز آسانی سے ملے. سو فرینڈس، ٹیک کیئر. اللہ حافظ.